One is the ability for a finance individual to connect the dots. अच्छा इससे मुराद क्या है? I think finance individual is the only person in the company who sees everything from top to bottom. Top to bottom से मुराद है is the top line to the bottom line. Like sales would be top line, marketing would be the marketing line of the P&L. And then there are the operations guy who are the operations cost of the P&L. And then there are tax guys who are the tax cost of the P&L and so on and so forth. But जो finance या FP&A का जो individual होता है वो पूरा P&L जो है वो देख रहा होता है. So the ability to connect the dots के यार अगर sales miss होंगी तो marketing पे क्या impact होगा, operations पे क्या होगा, ये एक ऐसी जो ability है वो किसी और के पास exist कर नहीं रही होती है. So if you can quickly connect the dots कि यार अगर sales miss होंगी हो सकता है inventory trade के पास बढ़ जाए, trade के पास inventory बढ़ जाएगी तो मेरे पास उनको sell off करने का risk बढ़ जाएगा या I have to sell them off or discount them. Discount करने का मतलब ये कि I have to create a reserve. तो मुझे शायद marketing से पैसा मांगना पड़े या optimize करना पड़े पैसा तो मैं कहाँ से optimize करूँगा? So I have to go to marketing. Ability to connect those dots कि जहाँ कोई एक decision हो रहा है आप उससे 4 implications निकाल लें कि यार आपने तो decide कर लिया है. As for instance, उमर ने तो HR का ये decision ले लिया है, but इसके ये 4 और implications होंगे, which if you bring on the table, no one else has any knowledge of that, and you can really succeed by doing that, which is ability to connect dots. दूसरा successful trade जो है वो है ये मुझे किसी ने senior finance individual they taught me that and I really liked it, which is the ability to translate a complex problem into very easy simple words. And उन्होंने इस तरह कहा था, उसने कहा था ये ग्रैंडमा रूल होता है. ग्रैंडमा रूल क्या है कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अपनी दादी को समझा सकें कि यार ये है जो हुआ है प्लांट पे, जो है वो प्लांट बंद हो गया है, उसमें कंटेमिनेशन हो गई थी, कंटेमिनेशन की वजह से जो है वो प्रोडक्शन हॉल्ट हो गई है, हॉल्ट होने की वजह से इतना इम्पैक्ट आ गया. ये आप सब अपनी दादी को किस तरह समझाएंगे? अगर आप वो समझा सकते हैं, that is what the second trait is. Because the pieces जो higher management होती है ना वो relatively dumb होती है. Because they're not into the weeds. By dumb I mean like they're not dumb, but they're not into the weeds. तो उनको ये चीजें समझ नहीं आती. अगर आप थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स करके बताएंगे ना कि जो एनपीवी इतनी से कम हो गई है और प्रॉफिट का लॉस इतना हो गया और कंटेमिनेशन हो गई है, इस तरह they won't get it. You have to make it very simple and easy for them. अच्छा, इसका एक और फ्लिप साइड है, मैं थोड़ी सी डिस्कशन किसी और साइड पे ले जा रहा हूँ, but when a senior management would visit Pakistan, let's say some white individual or European individual, and they'll come, senior VP would come and visit Pakistan and want to have a business review. And I would always go like, यार इसको क्या पता पाकिस्तान के बारे में, इसको क्या पता, मतलब ये what does he know, how will he add value? But उसकी value addition was always to ask or make things simple, very simple. मैं एक example देता हूँ. हम एक बारी present कर रहे थे एक senior vice president को about some technology that we would give to the sales rep. और sales rep वो technology से क्या है, उस technology में input करके डाल देगा कि यार क्या क्या store में कौन-कौन से SKUs हमारे exist करते हैं, उसकी shelving कैसी. So all the information. So I can go on my laptop and at any given time I know कि कराची में performance ये चल रही है in trade और इस store में मसला चल रहा है because they've punched in everything. And it was one of the best projects and we were feeling so proud and we presented to him. और जब प्रेजेंट करे थे मैंने कहा यार क्या सवाल करेगा इसमें, मतलब इसमें he doesn't know anything about the technology, he's not a guy from IT, he doesn't know anything about Pakistani trade, he doesn't know anything about what we are telling him, all मतलब it's just all info for him. उसने जो सवाल किया उसने कहा कि ये पंच इन करने में कितना टाइम लगेगा, because मैं ये चाह रहा था पता चले वैल्यू क्या ऐड करेगा. he has to justify his flight cost, his hotel and everything, so he has to look smart. How will he look smart in the meeting? तो लोगों ने कहा कि यार 5 मिनट लगेंगे. उसने बोला ये नहीं हो सकता. हमने बोला क्यों? उसने बोला no one will stand there, no sales rep will stand there and waste 5 minutes of their time punching stuff on their palm reader. और ये हमने सोचा नहीं. हमने कहा हम उनको बेस्ट टेक्नोलॉजी दे देंगे, उनको वो बैठ के, because imagine if you are a sales rep, आप बोलते हैं यार मैंने ऑर्डर लेना है, that is my strength, I'll take my order and I'll just run from the shop. You know what? Because I have to fill this form, I'll just click everything, okay, and I'll just run. So he said people will click it, people will complete it, but it will be bad data because that is not their job. They're not interested to do it, and this is costing them 5 minutes of their time. So rather they chase order or they chase filling this form. And I was like, wow. Now अब ये बहुत simple लगता है. It sounds like हाँ हमने क्यों नहीं सोचा? But the point is, you just make things so simple
so simple. उसी में स्ट्रेंथ है, बिकॉज हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम यही है कि हम हर चीज को मुश्किल बनाते हैं. तो अगर आप इंडिविजुअल एज स्टेप इन करेंगे एज अ फाइनेंस इंडिविजुअल लेट्स से, और आप बोलेंगे यार इस सब कॉम्प्लेक्सिटी को मैं सिंपल कर दूं, दैट इज द स्ट्रेंथ दैट यू कैन ऐड. बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं हम कहते हैं चीज मुश्किल कैसे करनी है. सो यू जस्ट टेक द अदर राउट. और इसमें मे बी आई गिव द थर्ड ट्रेट एज वेल. द थर्ड ट्रेट वुड बी playing devil's advocate. There were a lot of time when I would sit in a meeting, let's say कोई marketing की meeting हुई, I would go like यार इसमें मैं क्या value add करूँ. अच्छा मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बुलाया तो है, and I need to look smart because I have to say something, and I have no clue what they are talking about because they are talking about some marketing initiative जिसका मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, पता नहीं है. So how do I add value? And what I started doing was I would start playing devil's advocate. So सबने कहा कि हाँ यार इतने पैसे लगाएंगे, इतना ये आएगा. मैं ये कहता था अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ऐसा हो गया तो क्या है. Suddenly people go like यार ये तो हमने सोचा नहीं, ये आइडिया कहाँ से आया. आइडिया कुछ नहीं है, it's just that I flip the thing and I look smart because I play that devil's advocate of saying कि यार इस तरह से किसी ने सोचा. बिकॉज वो अमूमन ग्रुप थिंकिंग हो जाती है, स्पेशली जब एक ही फंक्शन के लोग बैठे हों, they'll just think in the same way. So I tell people as well, if you're in a meeting where you think why are you invited and you have no clue what's going on and you don't understand anything, just flip whatever they're saying and say it this way. Guys, I'm new to this meeting. I'm not the expert here. I'm not the marketing guy. ताकि आप थोड़े से humble हो जाएं, guards down हो जाएं. And I just want to play devil's advocate. How about after doing this investment, we don't get the returns? What happens? और अमूमन आधे टाइम लोगों ने सोचा नहीं होता. So when you'll do that, they'll go like, oh, ये तो हमने सोचा नहीं. That's a nice input. So that's a third thing that you can also do to bring value from your side. Okay, so one, trying to get the grasp of everything and getting a holistic picture. Second, making it very simple for the company and finding solution instead of just making it more complicated. And third, playing the devil's advocate. These are three traits Yes. that you feel a finance or even an accounting professional that can really help them.